Hello everyone! How are you doing everybody? So good to see all of you, my lovely students. I know you're super excited because somebody is on. You can't see them and you've just seen the poster. I have somebody super phenomenal. एक वेदांतों के मतलब literally चांद सितारे type people and they are so absolutely amazing. I have मतलब मैं लिटरली इनके वर्क के साथ एब्सोल्युटली इन ऑ हूँ जैसा काम ये करते हैं. आई एम सो ग्लैड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर फ्री ऑन यूट्यूब. बच्चों just be there for the next 35-40 minutes and I trust you. मतलब I want you to trust me कि अगर आप 300 350 400 के स्कोर तक अटके हुए हो and you feel that your score is not improving, I have something magical and something super duper phenomenal. So the person I'm going to get you introduced to in today's class, her name is Soumya ma'am. She is a master's in immunology. She is a master's from Penn State, which is one of the topmost universities in US, an MBA in Indian School of Business. The most amazing part of her education is that she is a specialist with over 10 years of education. पता है क्या करते हैं? ये customize करते हैं learning needs को. क्या मतलब होता है learning needs को customize करना? मतलब हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे की अपनी प्रॉब्लम्स है, हर एक बच्चे का स्कोर इसीलिए इंप्रूव नहीं हो रहा है बच्चों बिकॉज उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है. उसको उन प्रॉब्लम्स को अनलॉक करना है जिसकी वजह से स्कोर इंप्रूव होगा. आई थिंक व्हाट शी डज इज फिनोमिनल. वो जो बातें आज हमें बताएंगी वो जैसे वेदांतों के लिए आप सबको एकलव्य प्रोग्राम के बारे में पता है, हंड्रेड्स ऑफ रैंक्स आती है. वो इसीलिए आती है बिकॉज बच्चे जब हमारे पास आते हैं तब उनके 650-700 नंबर नहीं आते हैं. जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चों उनके नंबर आते हैं 300, 350, 400. वो जो जर्नी होती है वो जर्नी और 350 टू 650 की जर्नी मैम आज शेयर करेंगे एग्जैक्टली वो और उनकी टीम क्या करती है. एंड नोबडी हैज एवर डन दिस, नोबडी हैज एवर डन इट. दैट मैम इज गोइंग टू शेयर कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी डू विद दीज किड्स कि वो 350 से लेकर 650 तक चले जाते हैं. इट डज नॉट हैपन इन वन गो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट नीड्स हर एंटायर टीम. उनकी जो सालों से उन्होंने प्रिसीजन डेवलप किया, जो टेक्निक्स डेवलप किए कि क्या प्रॉब्लम होती है जो बच्चे अपने स्कोर को अनलॉक नहीं कर पाते. ऑल ऑफ दैट शी इज गोइंग टू शेयर विद अस. सो हियर वी हैव Soumya ma'am. Soumya ma'am, may I please request you to uncam yourself, unmute yourself, and here you have Biotonians waiting for you. So that is it, everyone. Big, huge, huge, huge round of applause. I'm so happy, ma'am. I've been a huge fan of you since the day I've met you, of the work that you do. It is absolutely cutting edge, amazing, super awesome. But हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी मैम क्योंकि हमारे बच्चे तो इंग्लिश समझते हैं. एंड बच्चों, सौम्या मैम इज फ्रॉम साउथ इंडिया तो हमारा इंग्लिश बहुत ही कूल है. यस, so don't worry, I'm sure you will all understand. Ma'am will try her best. So welcome, 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 Soumya ma'am. Welcome to this amazing session, and I hope that I hope कि I'm sure बच्चों को बहुत बहुत फायदा होगा. First of all, before I start, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर मैम? How do you feel? Thanks a lot, Vani ma'am. First of all, hello students. I'm super excited to be here. Super, super excited. And जैसे वानी मैम ने कहा है, मेरी हिंदी भी पक्का साउथ इंडियन वाली है, तो please bear with my grammar and my pronunciations. But समझ में तो आ जाएगा कि Yes, समझ में तो आ जाएगा मैम. So yeah, All I'm right. super excited, ma'am, and I'm very much looking forward to talking to the students. Same here, ma'am. So, kids, I'm again telling you something about Soumya ma'am. Soumya ma'am is the one who heads our learning outcome. हमारी learning outcome team की इंचार्ज की हेड है मैम. What is learning outcome? कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कितना सीख पा रहे हैं. अगर उनको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पता लगाना चाहिए हमें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. एक बार हमें वो पता चल जाए हम उन बच्चों को हेल्प करते हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में. वो पूरा डिज़ाइन कि कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको ओवरकम करना है, ये सब सौम्या मैम की टीम ही करती है. यस, पर मैम ये लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए कुछ नया और अनोखा है. मतलब ये क्या है? सो कैन यू टेल किड्स व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग आउटकम एंड व्हाट डज योर टीम डू हियर? It's almost what you explained, Vani ma'am. So I think we have very easy to understand content. We've star teachers like you, and हम तो मजेदार classes भी लेते हैं. पर पढ़ाते तो है, but the $1 million question for every teacher or every organization is कि हम पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में कितना आया. और it's not a 0 or 1 game, right? कुछ बच्चों को पूरा पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को पार्ट कॉन्सेप्ट समझ में आते
सॉरी टू इंटरवीन, बट मैम मुझे लगता है ये हर जगह होता है ऑफलाइन, और ऑफलाइन में तो शर्म के बारे पूछ नहीं पाते बच्चों। तो आप स्कूल में, स्कूल कितनी अच्छी बात बोली है मैम, स्कूल में जाओ, आप कॉलेज में जाओ, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओ, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जाओ, कहीं आपको होम ट्यूटरिंग हो जाए। कुछ बच्चों को पूरा समझ में आएगा, कुछ को थोड़ा समझ में आएगा, कुछ को और कम समझ में आएगा। प्लीज कंटिन्यू मैम, सुपर अमेजिंग। यस And that precisely, and like you said, it happens everywhere. But हमारे system में हमने उसको address नहीं किया है, right? And we are the learning outcomes team. सिस्टम में मतलब हमारे देश में, हमारे हमारे स्कूल में, हमारी सोसाइटीज में कोई बात ही नहीं करता है। यस Right, right. And what we are trying to do is understand कितना पढ़ाई हुआ है, हमने तो पढ़ाया है, but पढ़ाई कितना हुआ है for every child. मैम हुआ है को डेप्थ में समझाओ। हुआ है मतलब कितना एग्जाम में पता चल रहा है कि उसका नंबर आ रहा है, वो उसको कॉन्फिडेंस है। तो आप हुआ है को, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हुआ है मैम? Right. So क्या होता है, सब students को एक learning profile होता है. Okay, maybe I'll just take one step back. I'll talk a little bit about my background and I'll यस come back. यस मैम, यस मैम, यस मैम। And as NEET aspirants, आप बच्चों आपको भी थोड़ा interesting लगेगा शायद कि ये careers भी हो सकते हैं. I'm a cancer biologist by education. So what I used to do, I was doing research on cancer drugs and cancer mutations. और उसके बाद मैंने 7-8 साल personalization of cancer treatments में वर्क किया है. क्या है कि हर एक पेशेंट का अलग सा डीएनए प्रोफाइल होता है और उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देने से उनका It will ट्रीटमेंट work. बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है. Goes from 50% to almost 90% survival rates for these patients when you match the DNA profile with the treatment, right? And this requires a lot of data work and all of those things. And that is the last 10 years of my life, translating that into education. Right? How did this change happen मैम, from that to this? Exactly. Just like a DNA profile, हर student का एक learning profile होता है. And like you were asking, Marina, why does this happen, right? Why does this happen that every student has a different? See, हमें interest होते हैं, right? Some of you like botany better than zoology, some of you like cell bio better than, you know, some other part of biology, or you like physics better than chemistry. तो हम जब पढ़ते हैं, हम कुछ सब्जेक्ट्स कुछ चैप्टर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं. और एक और चीज है, लाइक अगर यू आर इन 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, देयर आर कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैड अ गुड टीचर जिन्होंने बहुत ढंग से पढ़ाया, और यू हैड अ बैड टीचर जिनकी वजह से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स 9th 10th में भी समझ में नहीं आए. अभी 11th 12th में वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, और वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका बेसिक्स ठीक नहीं है, right? So what happens, and students, you would have experienced this, right? एक certain chapters में आपको फट से समझ में आ जाता है सब कुछ, ऐसे ही like एक क्लास में या कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आ जाता है. और कुछ और चैप्टर्स है जहाँ पे आपको बहुत फाइट मारना पड़ता है कि जितना भी पढ़ो. Yeah, so the data usually says, of course, bio is the easiest for the NEET students, but chemistry, between chemistry and physics, they struggle more with physics. Overall, if you see the scores in physics versus chemistry, there is a slightly lower level of scores, mildly, but slightly lower level of scores in physics compared to chemistry. And also these are linked to certain type of intelligences that students have naturally as well. And it is again going back to the point is वो प्रोफाइल समझने से मुझे क्या स्ट्रेंथ है, मुझे क्या वीकनेस है. Sure. Yeah. Right. 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 बिकॉज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जैसे नीट जैसे एग्जाम्स में रिलेटिव भी हो जाते हैं, राइट? आपको लग रहा है कि मैं बायोलॉजी में आई विल स्कोर लाइक यू नो द फुल मार्क्स दैट आई एम सपोज्ड टू स्कोर. या बट सब लोग वही कर रहे हैं, तो देन यू आर नॉट गेटिंग द एडवांटेज.
right? So that is an important thing to know. So yes, strengths and weaknesses and relative understanding of. So आप एग्जाम में भी देखोगे तो अगर इवन बायो में आपको 340 on 360 भी मिल गया, but on the percentile you may still not go up significantly because the advantage may come from doing better in physics or chemistry, right? So ये सब understanding करने से आपको strategy better हो जाता है, आपका time management better हो जाता है, all of those things. Right. Yeah. Mm. Yeah. Mhm. Right. 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 Yeah, this goes back to the point I was making, Vani ma'am. So what happens is, let's say ninth, 10th में, let's take an example, right? States of motion है physics में. आपको, let's assume for a moment that you understood it आधा आधा में when you were in 10th grade. Uh, Speak, ma'am. so I'm saying that in Check, physics. check, check. Guys, just tell me Vinya, Vinutha, Manali, Priya. Just tell me whether you can hear Soumya, ma'am. Okay, I was not audible. Fine, fine, fine. Now is it fine? Both of us are audible? Right, so I'll repeat my question. My question is a very nice question to ma'am. So my simple question to ma'am is, suppose teachers are very good and this is exactly what you want me to discuss with ma'am. Teachers are exceptional. आपको आपके favorite teachers हैं physics, chemistry, bio के लिए. Right? आपके घर का atmosphere ठीक है. आपको घर में कोई परेशानी नहीं है. You're not distracted. No problem like that. Right, everyone? आपको आपको आप motivated भी हो. You are self motivated. You are inspired. Exactly what you tell me on Telegram, exactly what you tell me in classes, exactly what you tell me on Instagram, फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं. Who better than Soumya ma'am to help us understand this now? This is a very crucial thing, and like I told you before, I'm repeating again. Do not think it is pure gyan. I have a lot of extra points here. I have a lot of tests, syllabus. Soumya ma'am अकेले नहीं आई. She's like a secret Santa. She's come with a lot of goodies. Okay, guys? Yes, ma'am. So what can a student do now? Right. So, like you rightly pointed out, ma'am, it's not सब बच्चे बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करते हैं पर फिर भी like you rightly pointed out marks नहीं आते क्यों होता है ये I think I touched upon it earlier on. I'll go in detail. So अगर let's take an example, right? Physics में there is states of motion in 9th and 10th. Okay. Let us say when you studied it in 9th and 10th, you had a poor teacher or you didn't have time to understand those concepts. But ये बहुत fundamental concepts हैं. अगर states of motion समझ में नहीं आया तो जब आप 11th में आते हो mechanics है, dynamics है, 11th and 12th में, it is very, very hard for you to understand those concepts. You might memorize them very well, but जब मैं application की तरफ जाती हूँ और reasoning की तरफ जाती है, जो NEET में होता है, right? NEET is not about just memorizing things and going in, repeating it there, right? So you have to be able to apply. You have to be able to reason. So बच्चों को क्या होता है? They feel like they spent 3 hours learning or whatever number of hours learning mechanics, learning dynamics, right? But उनको जब क्वेश्चन टफ आता है इतना डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है राइट दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग सो किसी को आधा समझ में आता है किसको पूरा समझ में आता है व्हाट इज पूरा समझ में आना राइट पूरा समझ में आना ये है कि मैं कॉन्सेप्ट को किसी तरह ट्विस्ट करूं किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी डाल दूं राइट आपको कॉन्सेप्ट का इतना अंडरस्टैंडिंग है डेप्थ में
तो आप उसे ऐसे ही करवा देंगे, राइट? इट्स पॉसिबल फॉर यू टू अप्रोच इट. वो अप्रोच नहीं होता है जब आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है, राइट? और हर एक कॉन्सेप्ट को आप सोच लो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो बेबी सेल एंड मॉल, जो भी देखोगे वो सब शुरू होता है 8th 9th 10th से, राइट? शायद उस समय आप केयरलेस भी थे, राइट? आप थोड़ा प्लेफुल थे, यू वर पेइंग अटेंशन, right? So क्या होता है, you will get better by going back and also studying sometimes. It is okay, right? It's better to kind of sorry to cut you, but आपके कहने का मतलब है कि यार ये मेरे बेचारे बच्चे have already lost the battle 8th 9th 10th वाले. Of course not. No, there is. That's why I'm saying understand it. Once you self awareness जब हो जाता है, तो then you know कहाँ पे जाके आपको एफर्ट डालना है. Instead of spending 9-10 hours ratamorifying the dynamics or states of motion. Guys, see, a person who's heading LPT or complete learning progress in Vedantu, somebody who's been a cancer researcher for 10 years, somebody who's gone to the States to study from one of the best colleges of our country, are saying, please concepts को पकड़ो. पकड़ी यही है, इसी की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग शैलो हो जाएगी अगर आप रट्टे मारोगे. ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू. So that's what. So simply just self-awareness or smart study karo, right? Hard work is one thing. You have to, for example, I'm self-awareness ko just go in a little depth. How to know, ma'am? Like you've been doing this for hundreds of kids for so long. You have an entire team. You do it. Like अगर आपको मान लो मैम, you have to tell these kids who don't have anybody, who don't have a team like you. They're on their own. How can they find out? Is there some litmus test? कि यार ये मेरा टॉपिक ठीक है, ये नहीं है. What is your intuition? What does your gut say? If you have to tell them one Vedastra that this is it, तुम्हारा यार ये करो तो तुम्हें पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं. जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी चीज बोली, I loved it कि यार अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक होगा ना, आप उसको तोड़ मरोड़ के कैसे मर्जी पूछ लो, done. Right. How do you know it, ma'am? Do you have to solve 50 questions to know it, or do you have intuitively some way, because this is your work area, कैसे बच्चा पता लगाए मैम? It's not intuition, ma'am. I do have. I mean, like, do you know it? Yes. That's the goodie we've brought here, right? Intuition नहीं है, ये पूरा data-based approach है. Wow. So Vedastra is a diagnostic test for your learning profile, right? वही आपको वानी मैम अभी at the end of the session देंगे. That is the goodie bag. Yes. That is the secret Santa, the Vedastra. बच्चों stay tuned. ठीक है मैम. Yes, please. And the test is not a mock test, okay? So ये एक और NEET का mock test नहीं है. ये आपका learning का diagnosis test है. तो कैसा? It's not like a bunch of questions हमने ऐसे यहाँ से एक डाल के आपको नहीं दे रहे हैं. मेरे टीम में 3 PhDs हैं. Years of people with years of experience working in international agencies. और हम ये test design करते हैं with the intent of diagnosing your learning profile. आप समझ लीजिए, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो आपको किसी सिम्टम्स के पूछे बिना प्रिस्क्रिप्शन देता है. आपको भरोसा आएगा क्या उस डॉक्टर पे? Obviously no, right? You will get scared कि क्या हो रहा है? Why is he writing me a paracetamol when I don't have a fever, right? Correct. So that diagnosis, symptoms का diagnosis, वो होता है ये learning progress test. That's your Vedastra, right? Take the test. उसमें एक रिपोर्ट आएगा and that will tell you आप first of all relatively कैसे कर रहे हो, right? Between you versus all the other students who are here today who are taking this test. और फिर between like say organic, inorganic chemistry and physical chemistry आपको क्या area strength है, क्या area improve करना है, right? Similarly in biology, similarly in physics, what are the, and of course what questions you got right and wrong. Or we also tell you आपको memory based knowledge वाले questions आते हैं अच्छा, applied type questions आते हैं अच्छा, and reasoning is even more difficult questions, right? What we call HOTS type of questions. उसमें कैसे कर रहे हो, वो ऐसा डिटेल डायग्नोसिस मिलेगा आपको और उससे आपको सेल्फ अवेयरनेस जो मैं इतने समय से बात कर रही हूँ वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ पे मेरा एक्चुअल वीकनेस है एंड रिलेटिवली कहाँ पे मेरा एक्चुअल वीकनेस है, वो भी इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो मानी मैम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब टॉपर्स का है फॉर श्योर, राइट? एंड ऑल्सो यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट? टॉपर्स का ना
people are at already scoring, say for example, they are doing at a level of 650, 670 even now. But क्या होता है जब ये डायग्नोसिस टेस्ट लेते हैं तो आता है कि एक जो है, फॉर एग्जांपल मैथ का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत फेमिलियरिटी है. They are doing very well. They are on the top of the class. But होता है कि numbers अच्छा कर रहे हैं, geometry अच्छा कर रहे हैं, but algebra में सबसे नीचे कर रहे हैं. So if they spend their डेप्थ में time, एनालिसिस आता है. yeah. So if you spend your time on algebra, you go from 670 to 690, right? Or rather, in the case of NEET, it's the example is different, but essentially, you know where exactly to get that last 10, 15 marks you want. और of course एवरेज बच्चों को तो जो अभी 350 400 में है, right now instead of spending your hours on things that you already know, or you know it becomes inefficient. I'm literally stuck at 550 plus score, yet I haven't been able to score 600 or 600 plus except once. But still I have attempted roughly 12 chapter wise papers and 5 complete syllabus. What to do, ma'am? And then there's somebody else who's saying that I have given LPT for term 1. Regular students also watching our lectures. Right. So yeah. So exactly, जो भी बच्चे, you know exactly what ma'am is saying यार, कि toppers तो 670 से 680 जाएगा. आप सोचिए आपके पास कितना bandwidth है जाने का. You can go from like a 400 to 650. Correct. Because you will exactly know what is going wrong, what is the problem. Right. That is phenomenal, guys. I think it is just so amazing. Okay. Right. So ma'am, like you told, Vedastra is not just a test. It's not just any other mock test like you told us. It's not just कि यार इधर से उठाए question, उधर से उठाया, उधर से किया. You told us in detail. तो क्या इस वेदास्त्र से सच में बच्चे अपने रैंक इंप्रूव कर सकते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ टॉपर्स के लिए, like you said, but do you feel that 350 to 650 की जर्नी हो जाएगी? Do you like really feel that? Yeah, definitely. We actually have live examples from last year, ma'am. Just kind of, we had a student called Ananya Agarwal last year, and I think so. Ananya Agarwal, I'm aware, ma'am, that we had seen that presentation where the jump was so visible. Right. So when she first took the LPT, right? I mean, we had predicted a rank based on the LPT score. It was at 1 lakh plus, right? By the end of the year with Vedantu, obviously it's not just student self-study, right? आप बहुत कुछ करते हैं Vedantu में. Teachers are doing a lot of analysis while you're going through it. It's not like हम diagnosis करते हैं और आपको छोड़ देते हैं, right? So we are trying to kind of work with them. और इस बच्ची ने NEET last year में 1800 rank. She started with 1 lakh plus. 1 lakh plus 1800. बच्चे पूछ रहे हैं 550 to 680, is it possible? 100% बेटा. Definitely 100%. Ma'am, would you like to tell me something more about the report? आपने बीच में report word किया था. So what is this report? And now you use the word कि we are there with you. So what is that? Like ये बहुत exciting है. Report मिलने के बाद क्या होता है? कैसे report generate होती है और report मिलने के बाद क्या होता है, ma'am? Right. So report, just for timing, I think आप जब टेस्ट देते हैं आपको immediately or within 2 hours आपको टेस्ट का रिपोर्ट दिख जाएगा, right? The report will give you multiple aspects. Guys, I'll talk about the test. That is the big thing about today. I will talk about the test, so stay tuned. That is right. Yes. Secret Santa goodie bag जो मैम लेकर आई है. मैम आपके लिए फ्री में डायग्नोस्टिक टेस्ट लेकर आई है. Exactly pinpoint करना कि आपकी गलतियां कहाँ हैं जो आपने कभी पहले नहीं दिया. Yes, ma'am. Over to you, ma'am. So first of all, the score जो आती है, we call it a scale score. आप उसको it gives a full score. आप उसको ऐसे ही मान लीजिए कि this is like a height scale. आप उस scale में कितना ऊपर हो उतना better हो, right? और सब levels भी marked हुए हैं. You will see it on the report. आपका level आएगा कि level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviously level 5, 6 students तो already at a 600 plus level में कर रहे हैं. And your job is to go and look. I'll tell you what next layers come up. But जो बच्चे 3, 4 में हैं, तो then you definitely can go understand your weaknesses and really focus on that. And level 1, 2 में जो बच्चे उसको आ रहे हैं, I think you should go back a few grades. And that is the only way you will improve your grades. And that's my sincere advice to you. उसमें शर्माने के बाद कुछ नहीं है. Please go back and look at 9th, 10th का concepts. जो chapters आपको difficult लग रहे हैं, उसके पीछे वाले concepts को please spend some time on, right? So Foundation को strong कीजिए, like. Correct.
और फिर आपको व्यू डिटेल परफॉर्मेंस करके एक बटन मिलेगा उस रिपोर्ट में। जब आप उसको क्लिक करेंगे, देयर विल बी 3 पार्ट्स दैट यू विल सी। एक तो आपका क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस आ जाएगा, व्हिच इज हर क्वेश्चन में कैसे आपने किया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। फिर 2 सेक्शंस और है, व्हिच इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज टॉपिक वाइज, राइट। अगर आप केमिस्ट्री का पेपर लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का स्प्लिट आ जाएगा। बायो लेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, सेल एंड बॉल बायो एंड द लिविंग वर्ल्ड टाइप टॉपिक्स। उस 4 टॉपिक्स में आप रिलेटिवली बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं, मीटिंग एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या लेवल पे हो वो भी आ जाता है। And so obviously if you're below expectations, same thing, that means that you need to go back on your concepts. आप मीटिंग एक्सपेक्टेशंस हो, जो चैप्टर्स है उसको आपको और टाइम स्पेंड करना है, और exceeds expectations में हो तो प्रैक्टिस करना है, but pick the one where you are lowest and spend a little bit more time on that. That's where you make that last 10-15 marks का jump जो आपको वो टॉपर वाले ग्रुप में जाने का है उस So there's टाइम। something for everybody. Yes, it is for Everybody. It's not everybody. this कि यार टॉपर हूँ मेरे को क्या मिलेगा। आपको जो 10 नंबर कम आ रहे हैं वो पता चल जाएगा। आप Right. 350 पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा यार मेरे ये फाउंडेशन ही वीक है। आप Correct. हाई फाई कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, क्या पता आपकी फाउंडेशन वीक है जिसकी वजह से आपको उन कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, आपके मार्क्स नहीं आ रहे। और एक बार आपकी Right. फाउंडेशन या कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है बट आप कुछ गलतियां स्पेसिफिकली कर रहे हो। देखो मैम ने बीच में ये भी बोला था कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या आप जो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हो। इट इज अ वेरी इन डेप्थ एनालिटिकल टेस्ट, नोबडी हैज इट। मैम की टीम में मैम said there are 3 PhDs, there are people who spend their life trying to Correct. analyze how to assess learning, कैसे बच्चे सीखते हैं, सीखते हुए क्या मिस्टेक्स करते हैं, कहाँ Right. गैप्स रह जाते हैं। बेटा ये Right. गैप्स को अगर आप फिल करोगे तो ही योर फाउंडेशन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज दीस गैप्स आर गोइंग टू, आप पढ़ते चले जा रहे हो बार बार रिपीटेटिव साइकिल। बट कभी आपने बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की है? चलो Correct. सोचा है, पर अगर आपके पास कोई टूल नहीं होगा तो आप क्या इंट्रोस्पेक्ट करोगे? ये आपको एक ऐसा टूल देगा जो आपके सामने आपकी खामियों को पेश कर देगा। Right. ये प्रॉब्लम है, इन पे काम करना शुरू करो। जैसे एक लेजर लाइट है जो आपके गैप्स आपको दिखा देगी, यू फिल दोस गैप्स, ऑटोमेटिकली सर्दी हवा वाली अंदर नहीं आएगी। दिस इज फिनोमिनल मैम, दिस इज Right. ब्यूटिफुल, दिस इज Yes. जस्ट अमेजिंग व्हाट यू टीच। एंड आई एम श्योर मैम, जस्ट गोइंग बैक, आई एम श्योर वेदांतु के पास ऐसा कुछ नहीं था, यू क्रिएटेड इट फॉर अस, इफ आई एम Yes, नॉट we रॉन्ग। did. It is, and it's very. I mean, it's. I think, as far as I know, we are the only organization in the country that is doing it for the NEET JE aspirants, right? So to kind of So you provide built this it kind from of. scratch, man. It doesn't hurt to be to blow your own trumpet sometime, but it must have been so amazing to build it. Because I remember जब आप आए थे, ma'am, I remember having the very first conversation with you. It was also on a Google Meet before we actually met one to Yes, one. that's But to right. build this entire thing, Right. एंड गाइस, जो आपको लगता है एकलव्य में इतनी सिलेक्शंस हो रही है, एकलव्य के इतने बच्चे, वो दिस इज इट। हर किसी को अपनी गलतियां पता चलनी चाहिए। कबीर Right. दास दोहा नहीं बता के गए थे, बच्चों निंदक न्यारे रखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सोए। सो दैट्स अ कबीर दास दोहा, दैट मीन्स दैट whoever is your critic, you must keep your critic very close to you, because when Right. your critic is close to you, that critic will keep telling you what's the problem, and then so you Exactly. need And that's. somebody like that. बताइए मैम, over to you. Yes. No, I think that's. I think they summarized it with the Kabir Kadamba, right? I think वही है important कि even if you're doing very well now, आपको लग रहा है कि मैं तो अभी probably in your class और वो जो आप कोचिंग कर रहे हैं वहां पे आपको लग रहा है कि मैं तो टॉपर हूँ। That's one group of people, but आपको फिर से वो last 5-10 marks में, you know how competitive this is. Yeah. I don't have to You know, tell you. एम्स ऋषिकेश और एम्स दिल्ली में जो गैप है, 5 नंबर 6 नंबर का गैप है। Correct, आईटी exactly. दिल्ली, आईटी बॉम्बे में जो गैप है, दैट इवन देन यू नीड इट। इफ यू आर देयर आल्सो, वो एज, ये तो स्वॉर्ड का Exactly. एज करने के लिए यू नीड दिस टेस्ट। एंड अगर आप ऑल्सो नो तो आप ये जो टेस्ट ले रहे हैं वो हमारे एकलव्य बैच में भी टीचर्स यूज इट टू अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। वाओ। तो उसकी तरफ से वो कोचिंग भी करते हैं आपको कि सो दैट यू कैन एक्चुअली क्रॉस दैट लास्ट 5-10 marks। एंड एज आई सेड, मानिना इज नॉट जस्ट फॉर द टॉपर्स, जो लेवल 3-4 में है, जो अभी वो 400 वाले एंड मैम स्कोर। मेजॉरिटी वही है। देखो टॉपर्स मुझे लगता है फिर भी कर जाएंगे, तो मेजॉरिटी से बच्चा भी कर। मैम आई एम इन 360, कैन आई स्कोर 550? व्हाई नॉट? Identify your mistakes. 100% you can.
The biggest thing is to find out what you lack, beta. There is nothing which is, हम खाने को पहले टेस्ट करते हैं ना, किसी को सर्व करने से पहले, वाई यार चीनी तो ठीक है, नमक तो ठीक है, अगर चीनी नमक ठीक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, we add that little bit. It is exactly that. It will tell you where you lack. It will tell you what you lack. Nobody has it. It is not a mock test. It is a Right. It is test. not a mock test. Yes. Yeah. आप वो एक्सपेक्ट करके टेस्ट मत लीजिए. इट में भी थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या इजी क्वेश्चंस आ गए, ये तो बहुत इजी है. आई मीन दैट इज बिकॉज यू हैव क्रॉस दैट ब्रिज. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु नॉट क्रॉस दैट ब्रिज, राइट? एंड एज यू कीप गोइंग थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ेगा, एंड यू विल, व्हेन यू हिट द एंड, यू विल बी लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट. बट आप लोग पूरा, एंड नोबडी हैज इट. मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर कोई और आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट with report de de. Nobody is doing it. This is only because of Soumya ma'am and her team that Vedantu is able to do it, and we at Biotonic are able to bring it for you. This is phenomenal. मैं भी आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगी, but this is super amazing. Anything else you'd like to tell the kids, ma'am, before I show them the secret? Yeah, I think just thing. one word. I think anybody, like whether whatever you are, I think focus on improvement. आप milestones लगा दीजिए, right? You are at 300 today, आपको 350 जाना है. Don't look at the 700 को बहुत दूर दिखता है और आपको बहुत डिमोटिवेट भी हो सकता है उससे. आप हम आज कहा 300 से 350 कैसे जा सकते हैं, कल 350 से 380 का हम कैसे जा सकते हैं. Think in smaller milestones. It helps you crack and think improvement. Fundamentally क्या है लाइफ में, आप कहाँ पे हो अभी, उससे नेक्स्ट लेवल जाना है, उससे नेक्स्ट लेवल जाना है. अगर आप you know, it happens, all of us have started like that, we've all been there, Mariam, you know, I think we've all struggled through this. but आप next level के बारे में सोचिए. Don't get demotivated thinking मैं 700 600 कभी नहीं जा पाऊंगी. You will not. You will make 350, you will make 360 400 without realizing. एक दिन देखोगे आप पहुंच जाएंगे 550 600. Wow. So that is beautifully said, ma'am. Wow, this is so nice. Exactly, put those milestones, and this test will help you do that. It will bridge one or two gaps. Go ahead. Again, take a diagnostic test, bridge gaps. Go ahead, and without, पता भी नहीं चलेगा, you will reach 550 600. Correct. Super. And also, just Vani ma'am, they can actually maybe take these tests a bit later. We can do that again if required, and then they can also see कितना improvement हुआ है, right? How far have I come is also a possibility. Correct. No, we'll bring these tests for you again and again. And maybe once you give those tests, I will get Soumya ma'am again to read out the diagnostic report for you. That how exactly do you interpret it? क्या करे? अब इतना आया है, अब ये score आया है, ऐसा आया है, हर subject में इसमें इतना आया है. What do you do next? So we will have multiple sessions with her. Please don't worry. Super amazing. One big round of applause for Soumya ma'am here, everyone. And now I will take you through the test and the syllabus. Thank you so much, ma'am. It was a pleasure. Thank you, ma'am. And thank you, students. Wish you the very best, and I hope to see you soon again, hopefully. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. All right, guys. आ जाइए. अभी मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने टेस्ट पर. Right? So obviously you can't see me. Don't worry about that. Right? So you know me. You know our Telegram group. ये देखिए. राइट, एक तो ये एकलव्य का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. एकलव्य का पार्ट बनना है तो भी ये टेस्ट दे दीजिए. एकलव्य आपको पता है वेदांतु का फ्लैगशिप प्रोग्राम है. फ्री ऑफ कॉस्ट नीट के बच्चों को पढ़ाएंगे. असर्शन, रीजन, डाउट सपोर्ट, पर्सनल टीचर, टेस्ट, रिविजन, सब कुछ कराएंगे. राइट, एवरीथिंग. राइट, डेट इसका टेस्ट है संडे को 4 दिसंबर 11 दिसंबर. और आपको अब मैं अपने वेदास्त्र टेस्ट के बारे में भी बताती हूँ, सिलेबस के बारे में बताती हूँ और वेदास्त्र टेस्ट के बारे में बताती हूँ. तो ये देखिए, ये रहा आपका, यस, यहाँ पर ही ये आपका लिंक है. वेदास्त्र का जो लिंक है ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा. राइट एवरीवन, वी विल गिव यू द टेस्ट लिंक. मैं कम्युनिटी पेज पे भी इसके सारे टेस्ट डाल दूंगी. इसका फर्स्ट टेस्ट मैं 3-4 डेज में करवाने वाली हूँ एंड आई विल शेयर ऑल द टेस्ट लिंक. केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए. लगभग आपका भी सिलेबस खत्म होने वाला है, तो मैंने पूरा फुल सिलेबस करवा दिया है. राइट, कंप्लीट. एंड टेस्ट लिंक फॉर केमिस्ट्री आप दे सकते हो. इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगी. बायो का सिलेबस लगभग मैंने पूरा कर दिया है. बायो का टेस्ट लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी पेज पे डलवा दूंगी. फिजिक्स का इसके लिंक्स आपको डलवा दूंगी. डन एवरीवन. सो टेक केयर एवरीवन. मैं सारे लिंक्स आपको डलवा दूंगी. डोंट वरी अबाउट देम. आई विल सी यू टुमारो इन द इवनिंग विद हिना. हिना से भी बात करेंगे कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट में उसने उसको हेल्प किया. टेक केयर.
Bye. Bomb session. Bye, guys. Bye, guys.